have any questions for me? Questions related to videos? Easily videos clear हो गई class? Yes, sir. Okay, good, good. अगर easily clear हो जाती हैं तो अच्छी बात है. Well, I tried my best to get the most easiest videos out so that it's easy for you, it's simple for you, it's straightforward for you to understand all those. It was mostly about filtration. So if you have understood the videos, let me ask you some basic questions. All right. Let's start with the girl first. Hania. Hania beta, if something does not pass the filter paper and stays on top of filter paper, what do we call it? What do we call that substance? Hania beta, can you hear me? Sir, can I tell? Wait. We'll get to the boys, but let's, as we started with the girls, so let's wait a little. I'm not sure whether Hania can hear me. Hania, beta, you there? Oh, Hania says that her mic is not working. Yes, Hassan, you may watch the videos today. That's fine. And for Hania, you may write the message in chat, Hania beta. Agar mic kaam nahi kar raha, you can always answer in chat. That doesn't just go for Hania, that goes for the whole class. अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, तो आप आंसर चैट में लिखते हैं, ठीक है? और never write it privately, write to the whole class, so that everyone can see your answer. Just like what happens in an actual class, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप पूरी क्लास के सामने टीचर को आंसर करते हैं, टीचर के कान में जाके तो विस्पर नहीं करते हैं आंसर. So like over here in chat, you're going to answer to everyone. There is an option at the bottom of the chat where you can just answer me privately, or you can answer to everyone, but you only get the option in PC's version of the software. If you're using a cell phone version and an older version, perhaps you might not get the option, then that's fine. जी हानिया बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अभी आपके सामने डायग्राम भी है, सो आप बुक से देखकर भी बता सकते हैं, दैट्स फाइन. इट्स शेयर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर फिल्टर पेपर से कोई चीज पास नहीं होती है, इट स्टेज ऑन टॉप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है? सो व्हाट डू वी कॉल दैट सब्सटेंस दैट डज नॉट पास द फिल्टर पेपर? बेशक सामने से देखकर आंसर बताते हैं. वेट, ये कहना ही टेल ने अपने नाम में अदन भी लिखा हुआ है, रीच भी लिखा हुआ है. Who is this? Is this Adan or is this Reach? Adan. अच्छा. Okay. Adan beta, let's wait. Let's hope that Hania can answer the question. Okay, if not, then we are going to move on to other questions and other students have. Of course, I'm going to ask some more students. I'll come to you too, don't worry. Arham has an intention of answering the question. We'll ask Arham a question as well. Okay, let's move on. Let's not waste time. So Adan, do you have the answer for us? Yes, sir, solid. No, beta, that's not solid. And a good answer, Hania. We call it residue. What does not remain, what actually does not pass through the filter paper remains on the filter paper, stays on top of filter paper, whatever you'd like to call it, whichever phrase you'd like to use. The name of that substance is usually residue. Whatever the substance may be, it doesn't matter. Okay? I wasn't asking the state of matter. I was asking what do we call it. All right. So moving on to the next question and asking the question from Arham. Arham, can you tell us what do we name a substance if it passes through the filter paper? I mean, it does not stay on top of filter paper, it passes through it. What do we call it then? Arham. Sir, filtrate.
filtrate. All right. ज़ैनब बेटा अगर मेरी आवाज कट कर हो रही है तो probably आपकी साइड पर इशू ना हो. अगर सबको मेरी आवाज नहीं आ रही तो फिर मेरी साइड पर इशू होगा. आप स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है सबको? Most of you, if Yes. not all. Yes, Yes, sir. आ रही है. Okay, Yes, sir. okay, good, good. चलें. Next question from Afnan. जी Afnan. Afnan, Yes, sir. what did we actually use in this experiment for filtration purposes? Filtration के लिए exactly कौन सा substance material use हुआ है? Because there is a beaker, there is a funnel, there is a stand, there is a filter paper. There are too many things that we have used in the experiment. इसमें से exactly filtration किसने perform किया? सर Afnan. हम इसके लिए सर फिल्टर पेपर यूज करते हैं. Filter paper use करते हैं. Very good. Okay. Next, moving on to Halima. Halima beta, if we don't use the manual filtration apparatus as shown in the A part of the diagram in front of you, the B part of the diagram shows another set of apparatus. What do we call that? Which is shown in the B part of diagram. Halima. Buncher funnel. Okay, very good. And moving on to the next student, Ibrahim. Ibrahim, in Buckner's funnel, what do we use for filtration purposes? क्या उसमें भी filter paper use होता है या कोई और चीज होती है जो filtration कर रही होती है? सर हम फिल्टर पेपर ही यूज करते हैं पर उसमें वैक्यूम लगा होता है. Okay, good. Thank you, Ibrahim. Moving on to girl, Mariam Iftikhar. Mariam beta, Yes, sir. ठीक है? Buckner's funnel में vacuum का क्या purpose है? हमने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, हमें इस बात का आंसर इब्राहिम ने भी बताया, तो उसका पर्पस क्या है? सर एयर के लिए. हाँ, लेकिन उसका फिर फाइनल पर्पस, राइट? हम एयर को रिमूव कर रहे हैं, क्यों रिमूव कर रहे हैं एयर को? ये लिखा भी हुआ है सामने. Because sir it speeds up the flow of Very good, water. because it speeds up the flow. ठीक है, good, good. So I think कि जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो आप सबको समझ आती होंगी, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस किए उसमें हर एक ने अपना आंसर ठीक दिया, तो इसका मतलब आप सबको ये बहुत बेसिक मटेरियल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रेजिड्यू क्या है, फिल्ट्रेट क्या है, फिल्टर पेपर एग्जैक्टली क्या करता है. अगर हम मैनुअल सिस्टम यूज नहीं करते हैं, वकनर्स फनल यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं, या उसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमारे पास क्या है, ठीक है, वैक्यूम से कनेक्ट करने का पर्पस क्या है, एयर क्यों रिमूव कर रहे हैं, ठीक, कि प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है. सो यस, दैट्स राइट. मैनुअल सिस्टम ऑफ फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली प्रेफर्ड क्योंकि वो बहुत इनएक्सपेंसिव होता है. ऑलमोस्ट एवरीवन कैन इजीली परचेज अ फिल्टर पेपर और बड़ी आसानी से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है. ठीक है, फिल्टर पेपर इज सो इनएक्सपेंसिव दैट इट इज attractive because of that purpose. कोई भी परचेज कर ले, कोई भी इजीली एक्सपेरिमेंट कर ले, whether you are living in a country with good resources or you're living in a country with poor resources. If your own resources are good or if your own resources are not good enough, ठीक है, तो आपके लिए बहुत easy हो इसको परचेज करना. However, there is a downside to it. Filtration का process थोड़ा slow होता है. It takes a lot of time and time is very important. ठीक है. So in order to save more time, then that we can go with another setup that is known as Buckner's funnel, और या उस funnel को हम properly setup करते हैं. आपने देखा होगा कि इस setup के अंदर हमारे पास एक बाकायदा ऊपर छोटा सा glass based portion है जिसे हम with the help of cork एक फ्लास्क के अंदर सेट करते हैं, और उस फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक पोर्शन बना होता है, एक साइड पोर्शन बना होता है जो वैक्यूम पंप से कनेक्ट हो रहा होता है. वैक्यूम पंप उसके अंदर से एयर रिमूव करता है, वैक्यूम प्रोड्यूस करता है, उस वैक्यूम की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है ऊपर से फिल्ट्रेशन के लिए, और फिल्ट्रेशन स्पीड अप हो जाती है. ठीक है, तो एयर प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन तेजी से होती है. सो the only downside of this whole process, that the process was taking a lot of time, that downside is all already removed in this case. So if we remove the only downside and if we can speed up the process, that is very beneficial for us. Okay? So now not only the process is inexpensive or slightly expensive,
ठीक है? The process is still going through a smaller period of time, so that's easy for us. ठीक है? So moving on, we were actually doing the first paragraph. So let's continue with the same paragraph. We were talking about filtration, what's filtration, the definition of residue, the definition of filtrate, what is vacuum pump used for in a Buccaneer's funnel. So various large-scale filtration methods are used in industry. Perhaps the most useful of these are the filter beds that used to treat water for household use, the water for drinking purposes. फिल्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस इस वक्त भी दुनिया में ये है कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है हम उसे किसी तरह से प्योरीफाई करें, उसे ट्रीट करें और उसे ड्रिंकिंग यूज के लिए परफेक्ट बनाएं. ठीक है? Now, that is a big problem around the world, and I hope living in Rahim Khan, you are familiar with this process. आप जानते होंगे कि आपके पास although ground water का बहुत अच्छा source होगा, आपके घर में इस पर्पस के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं जो जमीन से वाटर जो है वो पंप करती हैं all the way to the reservoir at the top of your house. आपके घर के टॉप पे कोई ना कोई बड़ा सा टैंक होता है इस पर्पस के लिए कि वो वाटर स्टोर करे, तो वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं है. आप देखते होंगे कि आप स्टूडेंट्स में से कोई भी, अगर मैं किसी से भी यहाँ पर सवाल करूँ तो वो अपना ग्राउंड वाटर प्रोबेबली ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहा होगा. ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए क्या होता होगा कि आपके घरों में वाटर परचेज किया जाता होगा ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए. दैट इज अनफॉर्चुनेट. होना तो ये चाहिए कि ग्राउंड वाटर ड्रिंकेबल हो और आप उसे आसानी से पी सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमने पोल्यूशन से ग्राउंड वाटर इतना पोल्यूट कर लिया है, इतना गंदा कर लिया है कि वो अब हमारे लिए ड्रिंकेबल रहा नहीं. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पीने का पानी भी परचेज करना पड़ता है. That's why I hope you're all familiar with bottled water, you're familiar with mineral water, you're familiar with the processes जिसमें आपके घर में बाकायदा डेली बेसिस पर जो है ना कहते हैं ड्रिंकेबल वाटर की बॉटल्स बड़ी बड़ी आ रही होती हैं और हम फिर उन्हें डिस्पेंसर्स या और तरीकों से यूज कर रहे होते हैं. So I hope everyone is familiar that we purify water and we purchase drinkable water because the drinkable water is not drinkable for any of our ground sources. In fact, if we do try to use that, what happens is that we actually get sick. हमें different kinds of stomach problems face करना पड़ सकते हैं कि अगर हम उस ground water को use करेंगे. Any questions from this part so far? All right. So moving on. Let's move on to the other method. Now, you will notice that some methods are explained in detail. However, for example, this filtration has a big paragraph and the centrifugation method has only 5 lines. So it's the way how IGCSE or GCSE courses work. Some processes need a little bit of detail as per your standards, and some processes need to be discussed in shorter portions. So you're going to do the same. अगर किसी प्रोसेस को IGCSE डिटेल में डिस्कस करती है तो आप उसकी डिटेल्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए डायग्राम्स, उसके लिए बेसिक क्वेश्चंस, ये सारा कुछ पता होना चाहिए. अगर किसी प्रोसेस के लिए वो एक्स्ट्रा चीज़ों को डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन के लिए उन्होंने रेजिड्यू को भी डिफाइन किया, फिल्ट्रेट को भी डिफाइन किया, वैक्यूम पंप के पर्पसेस बताए, फिल्ट्रेशन के अपने यूजेस बताए, तो आपने उस सारी चीज़ को करना है. लेकिन अगर किसी प्रोसेस को वो सिर्फ डिफाइन है कि आगे मूव कर जाते हैं तो आपने भी उसको सिर्फ डेफिनेशन की लिमिट तक करना है. So actually, the lines or the borders are going to be drawn by IGCSE और इसमें जिस process को जितनी detail में किया है हमें भी इतनी detail से करना है. So moving on to the second paragraph, you know this paragraph is about centrifugation, but centrifugation is hardly explained in 5 lines and that's all you need to do about it. आप भी इतना ही इसे prepare करेंगे, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं करेंगे. ठीक है? So moving on, another method of separating an insoluble solid from a liquid is centrifugation, where a mixture is spun. Spun is the third form of spinning. Spinning means something who's moving around its own axis. Okay? At high speed in a centrifuge, centrifuge is a machine in which the things are spun at high speed. Okay? This causes the solid to be deposited at the bottom of the centrifuge tube, and the liquid can be carefully decanted down. Now, we are doing that
on daily purposes with our clothes. आपको पता होगा कि clothes की washing का जो purpose है हमारा वो complete होता है एक ऐसी machine से जिसे हम washing machine कहते हैं, ठीक है। हमारे पास उसमें जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या किया जाता है कि हम उस मशीन में उसे फिल अप करते हैं वाटर से, फिर हम अपना डिटर्जेंट जो होता है जिसे हम कॉमनली सर्फ बनाने के आदी हैं, ठीक है, वो हम उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में पुट करते हैं, सही। वो तो अच्छा खासा लादर प्रोड्यूस कर देता है, उसकी बड़ी एक अच्छी सी झाग बन जाती है, बच्चों को खेलने के लिए भी एक अच्छी चीज होती है वो, ठीक है। फिर हम अपने जो कपड़े जो है हमने वॉश करना होता है वो उसके अंदर थ्रो कर देते हैं, हम उस मशीन को टर्न ऑन करते हैं, वो एक्चुअली उसे स्पिन करती है, आप देखेंगे कि वो उसे सर्कुलर मूवमेंट्स देती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दैट पार्ट ऑफ द मशीन इज एक्चुअली अ सेंट्रीफ्यूज। वो थोड़ी सी स्पीड में उसे स्पन करेगी, ठीक। इस स्पिनिंग में हुआ क्या, उन कपड़ों के ऊपर ऐसे तमाम सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आर एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। आप देखेंगे कि सारी स्पिनिंग के बाद क्लोथ्स फिर भी टॉप ऑफ वाटर पे रहते हैं, लेकिन क्लोथ्स के साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या जितने भी सॉलिड मटेरियल था वो सारा बॉटम पे चला जाता है। तो क्लोथ्स को हम ऊपर से निकालते हैं, उन्हें एक सेपरेटली क्लीन वाटर से वॉश करते हैं, वॉश करके हम उन्हें ड्राई कर देते हैं। आफ्टर ड्राइंग your clothes are completely washed, clean again, and are ready to be used again. ठीक, तो वो centrifugation का process है। और this centrifugation process is not just only limited to washing, ठीक है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो sugar cane juice होता है इसे भी actually centrifuge किया जाता है before it is turned to sugar, ठीक है। वो जो व्हाइट शुगर आप अपने घरों पर इस्तेमाल करें, चीनी की बात हो रही है, वो आप अपने घरों पर इस्तेमाल करें स्वीटनिंग पर्पसेस, वो शुगर केन के जूस से बनी होती है, और शुगर केन जूस को पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है इससे पहले कि उसे शुगर में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट सेंट्रीफिकेशन? All right, let me tell you, we are done with 3 processes so far. Decanting was the first process, which was on the previous page. Okay. Let's go to the previous page. At the bottom of page number 27, we had the process of decanting. Moving on to page number 28, we have the process of filtration, and then we have the process of centrifugation. So we are done with 3 processes, and all these 3 processes are actually focusing upon the fact that they are for to separate insoluble solids from liquids. All right. So we might be interested in the solid, we might be interested in the liquid. Okay, it depends upon you what you need. In case of decanting, we were actually interested in the liquid, so we carefully poured off the liquid and used this process. In case of filtration, the good part of the filtration is that the solid is taken on the top of the filter paper, the liquid which passes through the filter paper is taken at the bottom. So in case of filtration, we get both things separately. We get the solid as well as the liquid. In case of centrifugation, we get the liquid that we are interested in, and it can be carefully decanted off. So basically, if we talk about the material that we are interested in, decanting and centrifugation both focus on the liquid. However, filtration is considered to be a good process in which you separate the solid as well as the liquid. So whichever one you're interested in, you can work on that. Okay? So in case of these 3 processes, which are all for the same purpose, to separate an insoluble solid from a liquid, filtration has an advantage that we can either work on the solid or we can work on the liquid, because it separates both into different compartments, into different sets, onto different positions. Okay? Hence, we had 2 definitions in the process: residue for the solid that was insoluble and actually collected on the top of the filter paper, and filtrate for the liquid phase, which was collected at the bottom because it passed through the filter paper. I hope that clarifies all of these 3 processes, as well as it compares these processes for a good understanding. Any questions so far? All right, if there are no questions, then let's move on to another
type of separation. The next type of separation that we're going to go with is separating immiscible liquids. Now, let me revise a couple of definitions. I told you we can mix a solid into a liquid, and we use the phrase soluble for that purpose. If the solid cannot mix or cannot dissolve in that specific liquid, we use the term insoluble for that purpose. What if we are mixing two liquids? What if we are mixing water and alcohol, milk and soda, water and soda, stuff like that? And these examples were actually mixing a liquid with another liquid. If there is a liquid-liquid solution, it is actually used not with the word soluble, but with the word miscible. If the liquids can mix with one another, the word miscible is used. But if the liquids cannot mix with one another, the word immiscible is used. Mixtures in case of immiscible liquids are actually defined into two separate layers. Let's go with the separation process so that we can understand what immiscible liquids are and how they are separated from one another, right? So going with these lines, mixture of two immiscible liquids can actually be separated if the mixture is placed in a separating funnel. So the instrument that we are going to use over here is known as separating funnel. It is allowed to stand. Actually, in the case of immiscible liquids, they form two separate layers, one at the top, the other one at the bottom. Take a look at this actual example, the B part of the diagram. At the top layer, you would see the oil. At the bottom layer, you will see the water. Oil and water are actually immiscible liquids. They do not mix into one another. Even if we try to shake them together and allow them to stand for a few minutes, for example, let's say 10 to 15 minutes, the two separate layers will form. There would be a layer on top and there would be a layer at bottom. Usually in the case of oil and water, the oil's layer is on top and the layer of water is at bottom. Now students usually come up with a question, why? Why isn't oil on top and why is water at the bottom? Or why in case of any two miscible liquids, the one on top, why is that on top? And the one at bottom, why is that on bottom? Now, let me clarify it here for you. And let's also write it. The two different layers, and you might want to write them down in your book as well. In case of immiscible liquids, represent density difference. I hope you're familiar with the word density. So actually, what we are talking about over here is the difference in density. The liquid on top has a lower, while the one at the bottom has a higher density, right? So that explains it. अगर oil on top है तो वो इसलिए है कि उसकी lower, और water bottom पे है तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी higher density है. कोई भी दो liquids जब वो immiscible होते हैं तो different layers form करते हैं. तो आप इन layers को इस तरह से judge कर सकते हैं कि जिसकी layer ऊपर form होगी, ठीक है, उसकी density less होगी, और जिसकी layer नीचे form होगी उसकी density ज़्यादा होगी. ठीक, ये हम आपको 6 में 7 क्लास में पढ़ा देते हैं. So this is a prerequisite. I'm only revising this part of portion so you can understand कि आपने पीछे क्या पढ़ा था, और अगर समझ आ चुका है well and good, you can easily revise कि हम इससे पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं. ठीक, so oil की density कम होती है इसलिए वो ऊपर होता है, water की density ज़्यादा होती है वो नीचे होता है. ठीक, this is known as a separating funnel. As you can see, separating funnel is a big long glass tube, and that has a tap at the bottom. This tap can be easily used कि आप इससे tap off कर लें one by one the liquids. तो अगर हम इसे tap को open करेंगे, you would see the liquid at the bottom which start flowing out of it first. ठीक,
So what do we do? These actually two diagrams do not tell us what we are going to do next. What we do is that we take a set of beakers. आप 3 beakers ले लेंगे 2 liquids की separation के लिए. Why 3 beakers? This should be a question from the students. So let's explain it. सबसे पहले जब आप इस टैप को ओपन करेंगे बेटा, तो ये नीचे वाटर का पोर्शन है, ये आपके पास स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप इससे फॉल आउट करना शुरू कर देगा. बीकर नंबर 1 पुट करें और इस वाटर को आहिस्ता आहिस्ता मूव करा के इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर नंबर 1 में ले लें. एक पॉइंट आएगा आपके पास, पॉइंट इन टाइम, जब ये वाली लेयर स्लोली नीचे मूव करती करती इस टैप के पास पहुंच जाएगी. जब ये लेयर बिल्कुल टैप के पास पहुंच जाए, तो अगर आप इस टैप को ओपन रखेंगे तो उसी बीकर में वाटर के साथ ऑयल भी मिक्स होना शुरू हो जाएगा. और हमारा सेपरेशन का जो पर्पस है, द होल थीम वुड बी किल्ड. ठीक. सो हम ये कहते हैं कि इससे पहले कि इस ऑयल या कोई भी ड्रॉप इस टैप से पास करके उस बीकर नंबर 1 के अंदर जा सकता हो, हम टैप को स्टॉप करते हैं और बीकर नंबर 1 को, जिसमें प्योरली हमारे पास वाटर है, उसे सेपरेट कर देते हैं. ठीक. अब आप पुट करेंगे बीकर नंबर 2. इन केस ऑफ बीकर नंबर 2, ये वाली जो लेयर होगी ये उस बीकर नंबर 2 से आएगी. बीकर नंबर 2 के अंदर फ्यू ड्रॉप्स वाटर के होंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के होंगे, और ये जो लेयर है इसका एक मिक्सचर सा बीकर नंबर 2 में चला जाएगा. टैप को स्टॉप कर दें उस वक्त जिस वक्त आपको लगे कि सारा वाटर निकल गया है, कुछ ऑयल भी निकल गया है. अब प्योरली सिस्टम से ये इस टैप से ऑयल पास कर रहा है. फिर आप इसको बंद कर देंगे इस टैप को और बीकर नंबर 2 को भी साइड पे कर देंगे. नाउ पुट बीकर नंबर 3. जितना ऑयल है वो सारा टैप ऑफ कर लें बीकर नंबर 3 में. अब आपके पास 3 बीकर्स हो गए. Beaker number 1 is pure water. Beaker number 2 is actually a small mixture of oil and water, some oil, some water. And beaker number 3 is pure oil. ठीक. तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ beaker number 2 को दोबारा इसी separating funnel या इससे और thinner separating funnel में put करें और उसकी separation दोबारा कर लें. So with a couple of separations or 3 separations or 4 separations, अगर आप carefully करेंगे, this is a tedious work and it requires care, it requires patience, it requires devotion. बच्चे usually इतना patience show नहीं करते हैं, बस जल्दी जल्दी पानी ऑयल को लैदा कर लें, बेशक वो mix हो जाए. नहीं, separation actually requires a lot of patience. ठीक है, आपको सब्र के साथ, आपको एहतियात के साथ स्लो केयरफुली काम करना होता है. और जहां कहीं भी आप एक गलती करते हैं, आपको अपना पूरा प्रोसेस रीडू करना पड़ेगा. ये दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस जिसमें आपने गलती से सेपरेशन की बजाय मिक्सिंग दोबारा कर लिया है, आपको वो रीडू करना पड़ेगा. ठीक. So just make sure that you are doing it patiently. आप in 2, 3, 4 different separations में separating funnel से बिल्कुल up to a limit of drops, ठीक है, ऑयल और वाटर को completely 100% separate कर सकते हैं. If not 100%, 96 to 97 or 98% separation can be easily achieved, which is actually a good part. But in this case, there is a point that this takes time. And in case of inexpensive apparatus, yes, time is the commodity which we need to spend. ठीक. So I hope आप सबको क्लियर होता हो कि हम किस तरह से सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं और उससे किस तरह से हम, ठीक है, सेपरेट करते हैं two immiscible liquids. Any questions so far? Okay, can I clear the text that I've written? Have you noted it down? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So I'm going to clear it up and we're going to move back to the previous page, which says that they can be easily tapped off. This type of separation is useful in industry. For example, at the base of blast furnace, हम blast furnace industry को इंशाल्लाह chapter number 9 में पढ़ेंगे. इसी book में हम slag को और iron को separate करते हैं और उनको easily tap off कर देते हैं. ठीक है. Next up would be separating mixtures of solids, which we are going to do tomorrow. ठीक है. Our work for today is done. ठीक. But I still suggest कि मैं आपको एक वीडियो भिजवाऊंगा सेपरेटिंग फनल के एक्चुअल यूज के लिए. वो वीडियो आप जरूर देखेंगे. हम उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे कल, लेकिन वो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए. You'll get the video through WhatsApp.